Welcome, dear students. This is our second lecture on Newtonian mechanics. Today we shall talk about the concept of rest and motion. Then we shall see that both concepts are relative. And we shall conclude today's lecture with Newton's laws. So let us start. अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें कि एक बॉडी जो है वो एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो वी से द बॉडी इज एट रेस्ट, बट विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो that body is at rest with respect to that frame of reference. लेकिन अगर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी बॉडी की पोजीशन रिकॉर्ड करें और हमें ये पता चले कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, तो we will say the body is in motion with respect to that frame of reference. But we shall see that the concept of motion and rest are related. This is our solar system. This is here sun. Number 1 is Mercury, number 2 is Venus, and number 3 is Earth here. This is Earth. Now this Earth is revolving around Sun at a speed of 30 kilometer per second. तो अगर मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो आई एम स्टेशनरी, मैं एक ही जगह खड़ा हूं और आप लोग भी अपने अपने बेंचेस पे बैठे हुए हैं. सो अगर मुझसे पूछा जाए, यू ऑल विल बी at rest because with respect to me you are not changing your position. So अगर मैं खुद को यूज करूं as frame of reference और मैं आपकी पोजीशन को रिकॉर्ड करूं, तो मैं देखूंगा कि ड्यूरिंग द होल क्लास जितने भी मिनट की हो, जितने भी ड्यूरेशन की हो, तो आई विल फाइंड यू ऑल वेरी मच एट द सेम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मी, विद एट द सेम पोजीशन. So I will say that you all are at rest. But if we ask sun, अगर हम sun को frame of reference बनाएं और उससे पूछें कि ये जो students हैं classroom में, are they at rest? तो sun will say no, they are in motion. They are moving at a speed of 30 kilometers per second with respect to me. So the same students which are at rest with respect to their teacher, they are in motion with respect to the sun. So it depends कि आप किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की स्टेट किससे पूछ रहे हैं, with respect to which frame of reference you are asking about the state of motion or rest. So that means the concepts of motion and rest are related. एक और एग्जाम्पल मैं दूं. दिस इज अ ट्रेन और दिस ट्रेन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. तो अगर इस पैसेंजर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाए और इससे पूछा जाए इज दिस पर्सन एट रेस्ट और इन मोशन, तो वो कहेगा कि इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मी दैट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग. So for this passenger, जो कि पीछे बैठा है, उसके आगे जो पैसेंजर है, this person is in the state of rest, right? लेकिन अगर इस शख्स को frame of reference माना जाए, this person which is standing stationary on the platform, अगर इसको पूछा जाए कि ये शख्स जो है ये रेस्ट में है कि ये मोशन में है, since the train is moving, so this passenger is also moving, so this passenger is in motion for this person, for this frame of reference. The same person is at rest
with respect to a co-passenger, but the same person is in motion for a person which is standing stationary at the platform. Another example, there's a driver in the car. तो हम यहाँ पे हैं, we are here. तो अगर हमसे पूछा जाए कि is this tree at rest or motion, तो we will say it is at rest. For us it is at rest. लेकिन अगर हम इस ड्राइवर से पूछें तो ड्राइवर कहेगा कि ये जो पेड़ है ये तो मेरे पीछे पीछे जा रहा है. It is moving in the backward side. So for this driver, the same tree is in motion. A tree appears to be in motion for a man moving in car, but for a man at rest, like we people here, the tree is in the state of rest. Another example, एयरप्लेन में पैसेंजर्स हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए व्हाट अबाउट क्लाउड्स, तो उनको लगता है कि क्लाउड्स तो पीछे जा रहे हैं. So for passengers in the airplane, the clouds are moving in the backward direction. But what about a person which is stationary on ground? तो उसको लगेगा कि जो बादल है ये एक ही जगह पे रुके हुए हैं. So the clouds are in the state of rest. Another example, that motion and rest के जो concepts हैं ये relative है. अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया. अब इवन अगर एक बॉडी मोशन में है और हम दो फ्रेम्स से पूछें, दोनों कहेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन, लेकिन दोनों बॉडीज विल मेजर डिफरेंट पोजीशंस, they will measure different states of motion, they will record different trajectories. अब अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और उनसे किसी बॉडी के बारे में पूछा जाए कि ये बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है, दोनों कह सकते हैं कि हाँ, द बॉडी इज इन मोशन, बट दे विल come up with different states of motion. They will come up with different trajectories. They will come up different positions at the same time. तो मैं उसकी एक एग्जांपल आपको दे दूं. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मानेंगे a person which is in the moving train, and another frame of reference is a person which is on the ground. और जो शख्स मूविंग ट्रेन में है, इट ड्रॉप्स स्टोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो जो शख्स मूविंग ट्रेन में है उसको लगेगा कि ये जो स्टोन है, इट हैज फॉलन वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई? बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉडी की है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पर्सन की भी है, विच इज in the moving train. So for the person in the moving train, the ball will follow this trajectory, vertically downwards. But for a person which is stationary on the ground, वो देखेगा that the ball is एक तो आगे आगे भी जा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, और दूसरी मोशन उसकी होगी ग्रेविटी के वजह से वो नीचे भी आएगी. सो फॉर दिस पर्सन द बॉल विल बी लाइक ए प्रोजेक्टाइल एंड इट विल मूव अलोंग ए पैराबोला. हालांकि दोनों कहते हैं द बॉल इज इन मोशन, but for one person the ball is moving along a vertical line downwards, but for another person the ball is moving along a parabola. हालांकि both will strike the ground at the same time but not at the same position.
Okay, then there is a question. This is about the projectile motion. There are two bodies. One is thrown with velocity, initial velocity u1, making an angle theta1, and another body is thrown with initial velocity u2 at an angle theta2 with the ground. तो ऑब्वियसली अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे दोनों प्रोजेक्टाइल्स हैं और दोनों की मोशन डाउनवर्ड पैराबोला है, दोनों की ट्राइजेक्टरी होगी. बट द क्वेश्चन इज कि इनमें से हमने एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है. सपोजिंग पहला प्रोजेक्टाइल, उसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है और उससे पूछना है कि आप बोलो कि ये जो सेकंड बॉडी है इसकी ट्राइजेक्टरी क्या होगी. Will the trajectory of a projectile as seen from another projectile will be parabola or something else? So let us see. हमारे पास इक्वेशन है कि आफ्टर सम टाइम अगर हम कहें कि द प्रोजेक्टाइल इज समवेयर हियर पॉइंट पी, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, राइट. तो इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्सप्रेशन है कि x is given by u into cos of the angle with which it was thrown, and the y coordinate is given by u into sine theta minus 1/2 gt square. So this is the expression for x coordinate and this is the expression for y coordinate. तो पहले हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट के लिए, तो वी विल गेट x1 कहेंगे हम. x1 will be equal to, that is the x coordinate of first projectile, that will be u1 cos of theta1, और उसका y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो that will be y1, the position y position of the first projectile, that will be u1 sine of theta1 into t minus 1/2 gt square. Similarly, अब हम देखेंगे what will be the position of the second projectile after some time t. तो x2 will be equal to u2 cos of theta2, और इसकी y पोजीशन y2 that will be equal to u2 sine of theta2 into t minus 1/2 gt square. अब y कोऑर्डिनेट में जो ये 1/2 gt square है, ये दोनों का कॉमन है, बिकॉज एक तो हमने देखना है दोनों की y पोजीशन आफ्टर सर्टेन टाइम t, और दोनों पे सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होती है. तो इनको रिलेट करने के लिए कि व्हाट इज द y पोजीशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और व्हाट इज द y पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. सो रिलेटिव पोजीशन देखनी है तो वी विल डू y2 minus y1. So we will get, जब हम इसमें से इसको subtract करेंगे, this and this will go. So you will get u2 sine theta2 t. इसको हम डिवाइड करेंगे रिलेटिव x पोजीशन, so x2 minus x1. So अच्छा, यहाँ पे मैं माइनस करना भूल गया, will be u1 sine of theta1 t होल डिवाइडेड बाय, इसी तरह जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी सबट्रैक्ट करेंगे. यू विल गेट u2 cos of theta2 minus u1 cos of theta1. अगर आप राइट हैंड साइड देखें, दिस इज अ कांस्टेंट, बिकॉज t का वैल्यू आपने दिया होगा, तो u2 it is the velocity with which second projectile was fired, it's a constant, this angle is constant, t का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये सारा का सारा एक नंबर मिलेगा हमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में. लेट दैट नंबर बी m. इसी तरह we will differentiate y coordinate of first from second, it will again give us a y coordinate.
we are differentiating y-x coordinate of first from second, तो it will again give us some x coordinate. तो यहां से हमें y मिलता है mx, which is the equation of a straight line. So अगर हम खुद एक प्रोजेक्टाइल पे बैठें, so we are here and we are the frame of reference and this is another projectile जिसकी हमने trajectory देखनी है, तो we will be moving along a parabola, a downward parabola. The another projectile will be also moving along a parabola, बट हमें लगेगा कि हम भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और ये जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. सो द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल as seen from another projectile will be a straight line. तो इस केस में हमने देखा कि दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ये कह रहे हैं द प्रोजेक्टाइल इज इन मोशन, बट स्टेट ऑफ मोशन भी डिफरेंट लग रही है. फॉर अ पर्सन हु इज स्टेशनरी ऑन ग्राउंड, वो कहेगा कि ये जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है इट्स ट्रैजेक्टरी इज अ डाउनवर्ड पैराबोला. लेकिन अगर हम इस पहले प्रोजेक्टाइल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो इट विल से इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज what we mean by saying that the concepts of motion, the concepts of rest, they are relative.